माइक सेटअप करे थोड़ो टाइम ले एकाद के माइक चेक रेडी 1 2 3 ચલો તો આજે એ જ મને સૌભાગ્ય મળ્યું છે તમારું લાસ્ટ લેક્ચર લેવા માટે આઈ એમ વેરી મચ ઇમોશનલ બાય ધ વે સ્ટુડન્ટ્સ હું એક ડૉક્ટર એક ફેમસ ડૉક્ટર છે જેનું મતલબ હાર્ટ સર્જન છે એનું હું એક ઇન્ટરવ્યૂ જોતો ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારું લગભગ 99% જે ઓપરેશન્સ છે હાર્ટ સર્જનના એ બધા સક્સેસફુલ છે તો પણ મતલબ તમને એવું કોઈ એક ઓપરેશન કે એવું કંઈ ઇવેન્ટ કહી શકો છો જેમાં તમને મતલબ થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું હશે એક ઇન્સ્ટન્સ તમે શેર કરી શકો છો ત્યારે પેલા ફેમસ ડૉક્ટર છે એ રિપ્લાયમાં કહે છે કે એક ઓપરેશન હતું જેમાં કે હું થોડુંક મતલબ ગભરાઈ ગયેલો એટલે ઇમોશનલ થઈ ગયું એ હતું મારું માનો ઓપરેશન રાઈટ કે આઈ કુડ નોટ ડિસ્ચાર્જ માય ડ્યુટીઝ પ્રોપરલી બીકોઝ આઈ વોઝ ઇમોશનલ એકચ્યુઅલી હવે એની વાત મને સમજાય છે અહીંયા રહીને કે તમારા માટે જ છેલ્લા દિવસ છે તમે જશો અને તમારા માટે અહીંથી ગાવો સો વેરી મચ ઇમોશનલ ઓકે તો પણ આજે સ્ટુડન્ટ્સ એક સ્ટોરીના માધ્યમથી આપણે આ તમારા 3 યર્સની જે જર્ની છે એને આપણે કન્ક્લુડ કરીશું આર યુ રેડી ગાઈઝ અને તમારે સાથે સાથે થોડુંક જે ધીમી ધીમી તાળી પાડવી હોય કે તમારે જોડે ગાવું હોય ટુ હેવ ટુ એન્જોય ધ ટાઈમ ઇઝ ઓલ યોર્સ ओके आर यू रेडी स्टूडेंट्स लास्ट में से यस नहीं आ रहा लास्ट बेंचर्स दिस साइड राइट हैंड साइड थोड़ा कम है फिर से राइट हैंड साइड ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स जैसे ही हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ज्यादातर बच्चे 10th के बाद आते हैं गुजराती मीडियम से आते हैं इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं यहाँ पे कॉलेज का जलवा कुछ अलग है पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पे लैब प्रैक्टिकल्स है वाइवा है सेमिनार्स है टर्म वर्क है ये वो मिड सेमेस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम तो बच्चा एकदम घबराया हुआ है फिर भी हमारे बच्चे हार नहीं मानते तो उसके लिए गाना है लाइफ थोड़ी हार्ड है अनदेखी कार्ड है हम भी तो सार है ना लाइफ थोड़ी हार्ड है अनदेखी कार्ड है हम भी तो सार है ना दुनिया की गोरी नहीं मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी ओ कि एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा एक मैं पूरी करा कि एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा मैं जीना मैं पूरी तरह स्टूडेंट्स हार्ड हम लोग हार्ड चैलेंजेस थे बट हम भी क्या है बहुत हार्ड तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स हार तो नहीं माने दोस्ती थोड़ी गहरी होती गई और दोस्ती मतलब ऐसा दोस्ती हो गया कुछ टाइम के बाद सबको अपने अपने एक दोस्त मिल जाए गए और कुछ फ्रेंड्स बन गए ग्रुप बन गए बहुत बढ़िया और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मानो एक पल भी उनके बिना ना चले तो उसके लिए एक सॉन्ग प्रस्तुत कर रहे हैं मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की नजरों की सच कर रहा तेरी कसम तेरे दिन न लेंगे एकदम तुझे कितना जाने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना जाने लगे हम स्टूडेंट्स धीरे धीरे दोस्ती इतना गहरी होती गई उसके बाद 2 सेमेस्टर खत्म हुआ 3 सेमेस्टर खत्म हुआ जब अभी वीकेंड आ रहा है या वेकेशन पड़ गया अब उन दोस्तों को मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है अब फैमिली के साथ जो मजा तो आ गया वीकेंड घूम लिए बट फिर से वो कहीं ना कहीं आपके दोस्त याद आ रहे हैं तो उन दोस्तों के लिए मतलब दूर है फिर भी क्या आपको फीलिंग हो रहा है उसके लिए कवि ने यहाँ पे क्या सॉन्ग प्रस्तुत किया है लेट्स सी न हो के भी करीब तू हमेशा पास था के सोचना भी देखता मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआ तेरे
मैंने कर दिया, जो भी था सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कहते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, है ना भाई। जब मुसीबत आए तब एक दोस्त हमेशा खड़ा रहता है। कभी आप कुछ काम बाहर के करवाने हो, कोई लाइन में खड़े हो कि भाई ये काम कैसे करना है, આપણી તો ઓળખાણ છે આપણી તો ઓળખાણ છે ભાઈ। તો આ ટેગ લાઈન બની ગયું છે આપણા જે સિનિયર્સ ના, રાઈટ। હવે કોઈ દોસ્ત ફસાય છે અસાઇનમેન્ટમાં, કોઈ દોસ્ત ફસાય છે પ્રેક્ટિકલમાં, કોઈને લાસ્ટ ટાઈમનું મિડનું કોઈ પ્રશ્ન આવડતું નથી, કોઈને જીટીયુ ના એક્ઝામના પહેલાના 10 મિનિટમાં જે સર બોલાવતા હોય ચલો ટીમ પતી ગઈ છે અંદર આવ, તો પણ તમે તમારા ફ્રેન્ડને કહો છો એક સર 2 મિનિટ ખાલી આ સમજાવી દો। એવા ફ્રેન્ડ્સ માટે મતલબ જે મુસીબત માટે હંમેશા શું હોય છે, રેડી હોય છે, એ ફ્રેન્ડને હેલ્પ કરવા માટે એ લોકો માટે આ સોંગ ડેડિકેટેડ છે। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरे साथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरे ओ हमनवा। સ્ટુડન્ટ્સ હવે એ દોસ્તી શું કામનું છે, એમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ ના હોય, વચ્ચે થોડુંક એવું ના આવે કે કંઈક તમારા વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો અને કોઈ એવું લાગે છે કે અરે અમારું વચ્ચે સારું ફ્રેન્ડશિપ હતું, પણ હવે કોઈ ત્રીજો આવી ગયો છે જેના તો તમારા વચ્ચે અંદર એક રહે છે કે ના ભાઈ આ કેમ, તો યુ આર ટ્રાઇંગ અગેન ટુ ગેટ ધેટ ફ્રેન્ડશિપ મીન્સ અગેન, રાઈટ? યસ ઓર નો? યુ આર ટ્રાઇંગ અ લોટ, ઓકે? એના માટે સ્ટુડન્ટ સોંગ ડેડિકેટ। जाते नहीं कहीं से पुराने किसी लड़के के आ जाने से, जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा तो जुड़ा क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा क्यों, अपने तू ये कहे कि यार हम न रहे, एक तेरी यारी की सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ બધાને જો આપણે એક આખો આપણો જર્ની જો અપડાઉન્સમાં સ્ટાર્ટિંગ થી અપડાઉન સુધી આવી ગયું, હવે લાસ્ટમાં જ્યારે આ ટાઈમ છે કરંટ, જો એક સોંગથી આપણે આખા 3 વર્ષને કન્ક્લુડ કરીએ તો મને અરિજીત સિંહના આ સોંગ યાદ આવે છે, वो दिन भी क्या दिन। બધા ગાશો મારા જોડે? યસ, થેન્ક યુ। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, ब्लैक में पड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। સ્ટુડન્ટ્સ હવે લાસ્ટ લિરિક્સ હું બહુ ડિલેમામાં પડીને સિલેક્ટ કરું કે લેવું કે ના લેવું, બિકોઝ આ લિરિક્સ જોતા જોતા આઈ વોઝ સો ઇમોશનલ વાઇલ સીઈંગ ધેટ મીન્સ પર્ટિક્યુલર લિરિક્સ, તો હવે હું ગાઈ જ લઉં છું। तुमको भी है खबर, मुझको भी पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना
कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. હવે ફેકલ્ટી તરફથી છેલ્લો સોંગ ફોર ડેડિકેટ ટુ ઓલ આવર બિલો સિનિયર્સ. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुआ पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना. अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया. चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया. चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.